Just a minute, sir. I think we are already live. Just a minute. Yes, sir, we can live now. Okay, very good evening to one and all, and welcome to the mock one analysis. So I think I was in touch with a few of the students. Then there were mixed reviews. क्या अच्छा था, क्या नहीं था. Paper was easy, paper was tough. So verbal was very easy. We thought that verbal paper जो है बहुत ज़्यादा easy है, but still at the end. Questions. I mean, when we talk about results, reading comprehension specifically, there are mixed reviews, right? कि बहुत easy था या moderate था. And when it comes to verbal ability, sir, para summary के अंदर हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई. So today, what we'll do is before even getting into the solution, right? हम लोग solution की बात कर रहे हैं. So the first thing what we will do is we will analyze all the three sections together between me and Ankur sir. So Ankur sir, welcome on board. So what we'll do is we'll start with verbal ability, then moving on to logical reasoning, data interpretation, and then we will move on to quantitative aptitude. So I would like to start with my first take on verbal, and then I would like Ankur sir to have a formal this thing on what exactly LRDA and quant looks like, and then we'll get into the drill down analysis of passage wise, question wise, what all questions needs to be attempted, needs to be left out. That's what we'll be doing in this particular video. So very warm welcome to one and all, and welcome to the mock one analysis. So let me start with this overall paper. I would say overall this paper, specifically verbal, if I would say, it was on a moderate level, to be honest with you, right? So it was easy to moderate kind of a level. That's what I think as far as verbal ability is concerned. Reading comprehensions were easy, apart from that Japan thing, right? Japan culture, sociology passage. That I thought is a bit tricky. Otherwise, the passages were very easy. Para summary, yes, para summary was difficult. Odd sentence parajumbles, moderate category, and parajumbles again, two were doable for sure, right? So दो parajumbles जो हैं वो doable थे, and that's what I thought about verbal ability and reading comprehension section. Ankur sir, over to you. What do you think about LRDA and quant section? Okay, so thank you for sir, and I think जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक वीडियो को देख रहे होंगे या तो बाद में देखेंगे, सो डेफिनेटली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मॉक टेस्ट को. आपको लगा हुआ होगा कि फर्स्ट टाइम 2 घंटे एक ही जगह पे बैठ के आपने मॉक टेस्ट को लिखा होगा. सो मेनी थिंग्स आपको वहां पे मिली होगी ऑब्जर्व करने के लिए, कई सारी चीज आपको दिखी होगी. सो मैं LRDA की स्पेसिफिकली बात करूं तो आई थिंक जो फर्स्ट में पैराग्राफ्स की या सेट्स की जो मैं बात करूं, सॉरी, it is a 1 to 6 जो questions थे, right? I think that was from missing data set if I am not wrong. And 7 to 10 की जो मैं बात करूं तो that was the puzzle based question जो था. Definitely मैं always in my mentoring session और कई जगह पे मैं स्टूडेंट को पुश करता हूं कि गाइस आप पजल्स के ऊपर थोड़ा टाइम लगाइए, बिकॉज उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, राइट? वो कई बार हमारे लिए सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज हम बहुत टफ प्रैक्टिस करके जाते हैं. 11 to 16 आई थिंक दैट वाज द डिफिकल्ट. अंकुर सर, जस्ट अ मिनट, sorry to interrupt you. So कुछ चीजें आ रही हैं. Yes, I will specify, guys. Just a minute. I'll specify in detail about percentile versus marks. So don't worry at all. We will do that for sure. Options were tricky in reading comprehension. Ujjwal, okay, we'll talk about option as well. Don't worry at all. Anup is saying, Ankur sir, कि time में बहुत झटके लग गए sir. ऐसा सोचा नहीं था. So good. I think that's why mocks are very, very important. And Anup, when we talk about answer key कब तक होगा, I think immediately आपको answer की मिल गया होगा, solution मिल गया होगा. But still, no, don't worry. I'll be sharing with you the detailed solution of all the 3 sections right at today at 9 p.m. for sure. Yash is saying reasoning is tough, Ankur sir. Ki reasoning बहुत tough था. Yes, over to you, Ankur sir. Sorry to interrupt you. I thought I'll just
share all Yes, the yes, feedbacks, all the data definitely. which is coming up. So yes, please sir, consider the all chats because I am not able to see it. So please आप थोड़ा उसमें help करते रहिए. Right. So guys, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि फर्स्ट सेट वाज द जो मिसिंग डेटा में से था, जो डेफिनेटली मॉडरेट, मैं इजी तो नहीं बोलूंगा बट दैट वाज द मॉडरेट. और जो मैं बात करूं कि पजल्स, दैट वाज द अगेन द मॉडरेट. राइट, दैट वाज द अगेन द मॉडरेट. लेकिन मैं जो लॉजिक बेस्ड जो डीआई जो था, दैट वाज द एब्सोल्युटली डिफिकल्ट. राइट, मैं उसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, दैट वाज डिफिकल्ट. जो क्वेश्चन था 11 to 16, अनफॉर्चुनेटली शैलेश ज्वाइन नहीं कर पाए हमको, अदरवाइज आई थिंक बेहतर ग्लिम्स दे पाते. सो मैं यहाँ पे जितना भी कोशिश कर रहा हूँ, डेटा अरेंजमेंट की मैं बात करूँ, दैट वाज एब्सोल्युटली इजी. जो गाइस आपने जो 17 से 20 का जो क्वेश्चंस करके आप नहीं आए हो, तो दोस्त सबसे मेन थिंग जो आपको समझने होगी एग्जाम्स के अंदर कि योर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, लेकिन आपका इजी जो सेट था वो था 17. ऐसा मत सोच लेना दिमाग के अंदर कि एवरी एग्जाम में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फोर्थ सेट तक पहुंचे नहीं होंगे. सो यस प्रशांत सर, इफ यू वांट टू स्पीक एनीथिंग. राइट. सो मैं एक बार जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को सुन रहे हैं, सो आई सेड दैट verbal was easy to moderate, and then Ankur sir is saying again logical reasoning DI was moderate to difficult. And abhi Ankur sir jo hai abhi quants ke bare mein bhi batayenge. Overall he will give his data that what exactly was the level of quants. Once Ankur sir is done with quants, I want all the students listening to this session to share their this thing, that how you felt about all the three sections. Over to you Ankur sir, start with quants. ओके, सो मैं क्वांट की बात करूं, सो मैं आपको डेफिनेटली सबका प्यारा होगा, देयर इज नो डाउट्स. क्वांट बहुत इजी था. मैं बात करूं तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था. आई थिंक चैट बॉक्स के अंदर भी प्रशांत सर आप देख पाएंगे कि आई थिंक आपको मेजरली कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल रहे होंगे कि क्वांट के अंदर चैलेंज आया था या कुछ नहीं आया था, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्युटली मॉडरेट टू इजी में बोलूंगा, उसको मैं बिल्कुल हार्ड नहीं बोलूंगा. राइट, जो मैं इसके अंदर बात करूं आपको कि आइडल यहाँ पे सेट्स एंड पैसेज तो होते नहीं हमारे केस के अंदर, लेकिन मैं आपको बात करूं कि आपके पास 40 मिनट्स का टाइम था. क्वांट को सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम था. बिल्कुल आपके दिमाग के तार हिला दिए होंगे LRDI ने, फिर भी आपने कोशिश किया होगा कंट्रोल करने का कि सर क्वांट को कैसे डील करे. तो फर्स्ट राउंड मतलब जो फर्स्ट 20 मिनट से प्रशांत सर जो आप नोट डाउन कर पा रहे हो, तो फर्स्ट 20 मिनट जो थी उसके अंदर आपको क्वेश्चन करना चाहिए था सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14, 16, 21 एंड 22. मैं रिपीट कर रहा हूं, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 21 एंड 22. एक क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन जो आपके छोड़ के आए हो तो दोस्त दैट इज डिफिकल्ट. मतलब ये एब्सोल्युटली इजी था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था. सो आई होप आप लोग ऐसे कुछ समझ पाए होंगे, सोच पाए होंगे. मैं लेवल 2 की बात करूं कि सर हमारे पास अभी भी 20 मिनट बची है, सो जो सेकंड राउंड के अंदर हम जाएंगे, सो आपको बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करना चाहिए था. एंड दैट वाज व्हिच आई हैव पिक अप, व्हिच इज द 6, 10, 13, 17, if I'm not wrong, 18, 19 and 20. So this was the absolutely moderate level of the question. And मैं आपको दोस्त यहाँ पे एक बात बता के जाऊंगा कि जो लास्ट में L3 के अंदर लिखना चाहूंगा, which is the level 3, जिसके अंदर मैं आपको लिखूंगा 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12. एब्सोल्युटली छोड़ देना चाहिए दोस्त. सर कैन यू प्लीज 1, 4, 5, 8, 1, 4, 5, 8, 9, 11 एंड 12. ओके, इस क्वेश्चंस को एब्सोल्युटली छोड़ देना चाहिए. उसमें कोई डाउट्स नहीं है, उसमें कोई डाउट्स नहीं. इस क्वेश्चंस को आइडियली टच नहीं करना चाहिए. आपने किया है, आंसर आ गया है, वंडरफुल, क्लैपिंग फॉर यू. लेकिन जो आपको लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो आइडियली आपको इस क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए था. यस प्रशांत सर, ओवर टू यू. Okay, so I'll start with this. So quants, Ankur sir said easy to moderate. How many of you accept this quickly? कितने लोगों को लगा quant was easy to moderate? Lovepreet is saying sir quant में problem आ रही है. Okay, Ujjwal is saying quant or easy. Okay, Shivam is saying okay, Shivam, okay. I mean I don't want to say that, but still okay. बाद में दे देना, no issues at all. बाकी लोग, how many of you accept this कि quant was easy to moderate? Quickly the chat box. quick, quants was easy to moderate. How many of you accept this? Okay, अनूप बोल रहे हैं कि भैया LRDI में तो सर आप मजे आ गए बहुत ज्यादा. अब दैट मजे आना is what डिफिकल्टी लगा, हालत खराब हुई, I don't know. Okay, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हुआ. Okay, I agree.
Okay, fine, fine. ठीक है, good, ठीक है. So good. So I think जितने लोग भी reply कर रहे हैं is like, sir, quants we agree. No sir, quant was moderate to hard. So then we are coming. Yes, if I am not wrong, yes, जुम्नानी की comment होगी. If I am not wrong, तो बिल्कुल that is absolutely easy to moderate. I मुझे इतना कोई डिटेल में इसके अंदर नहीं जाना है. We will definitely discuss in our the class. अपन अपने क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर बात करेंगे. और इनफैक्ट तुम्हारे को अभी just don't worry at all guys. Right after this, by 9 o'clock you'll get a detailed video solution for all the 3 sections. Don't worry. Vanshika is saying sir easy था but time mismanagement हो गया. ठीक है, अभी LRDI was difficult. उज्जवल वो हमेशा लगेगा. वंशिका वो हमेशा लगेगा. ठीक है, आरसी में प्रॉब्लम आ रही है. ओके शिवांकर, ठीक है. सलो इज सेइंग LRDI was difficult. तो यस यू गाइस आर राइट. LRDI हमेशा डिफिकल्ट लगेगा गाइस, बिकॉज देखो हमेशा नया सेट लगेगा हमेशा. हाय यश, हाउ यू? इट्स नॉट राइट. So LRD आपको हमेशा difficult लगेगा because every time we are talking about new sets guys. Every time we are talking about new sets. So LRDI नया लगना वाजिब है. So quickly if I talk about some percentiles, my first take, then we'll get into. चलो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं section wise पे आता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपने 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 जो जिज्ञासा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो. I'll definitely ensure that I'll talk about the desired percentile and everything. So let's start with verbal ability and okay, so let's start. Hello Manish Puri, hello. So let's talk about verbal ability and reading comprehension. और यहाँ से start करते हैं. First of all, total questions were 24. जैसे अंकुर सर ने L1 L2 की बात करी, right? So let's talk about RC के options confusing the coach. Please tell me about English portion. That's what I'm going to start with, Manish Puri. So just a minute, I am going to start there only. So verbal ability and reading comprehension, there were 24 questions. There were 40 minutes. And if I talk about reading comprehension, question number 1 to 16, 1 to 16, they were easy. Sir, quants were easy. Would like solve from Jaisa, though it tells how to solve early minimum pen. Yeah. Okay, we'll talk about it. SM, what's your name? At least I want to get the name. And though I can understand from where it is coming from, it will be done, but at least I want to know your name. Okay. So reading comprehension, 1 to 16, I personally feel that overall, if I talk about the RC paper, I want to get it. I want to take it into an easy category. Second, when we talk about odd sentence parajumbles, I want to take it in a moderate category. There were 2 odd sentence parajumbles. If I talk about parajumbles overall, it was easy to moderate. So out of 3, there were 2, as I said, which was doable. So out of 2 out of 3 is something which I think should be doable for sure as far as parajumbles is concerned. And summary was moderate to difficult. Agar aapka is summary based question, there were 3 summary based questions. I think 1 out of 3 would have been more than sufficient. 1 out of 3 would have been sufficient. So overall, agar main baat kar raha hu reading comprehension ki, odd sentence mein se. So odd sentence ke andar I would say 1 out of 2, parajumbles 2 out of 3, para summary 1 out of 3. So मैं 8 में से typically आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमेशा क्लास के अंदर भी बात करता हूँ. 4 to 5 out of 8 questions in verbal ability was doable and more than sufficient. You don't have to solve all the 8 questions, right? And if I talk about reading comprehension, typically I'm talking about all these things for a 99 percentiler, obviously 12 out of 16, right? For a 99 percentiler. That's what, if I talk about verbal ability and reading comprehension, all about. And the time distribution is reading comprehension ke andar you should devote close to around 30 odd minutes, or not I would say close to around, I would say exactly 30 odd minutes in reading comprehension, and all the 3 put together of verbal ability, I would say 10 odd minutes. So this should be the time distribution as far as this 40 minutes is concerned. Okay, let's move further. ये रहे आपके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पैसेज वाइज. प्लीज आप जब मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, नाउ दिस ऑल थिंग्स शुड बी डन व्हाइल डूइंग अ मॉक एनालिसिस. नाउ द पॉइंट नंबर 1, पैसेज नंबर 1, एज आई सेड, आइडल अटेम्प्ट्स शुड बी 3. आइडल अटेम्प्ट्स शुड बी 3, राइट? एक क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, इसलिए मैंने लिखा है 9 मार्क्स. मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, गलत नहीं करेंगे. सो ओवरऑल व्हाट आई हैव रिटन हियर इज 6 minutes along with questions. 6 minutes this passage along with questions. और यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने 28 और 12 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट यू कैन गेट 30, 10, 28, 12 डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट जोन as far as this passage is, I mean overall RC is concerned.
पैसेज 2 एज आई से 5 मार्क्स, आइडल अटेम्प्ट्स 3। सो इसके अंदर एक क्वेश्चन गलत होने की, एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो। आउट ऑफ 4 3 अटेम्प्ट करो, 2 सही करोगे, एक गलत करोगे। ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट 5 मार्क्स। सो 9 मार्क्स हियर, 5 मार्क्स हियर, आइडल अटेम्प्ट शुड बी 3, राइट। मैं इसके अंदर भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, छोड़ने चाहिए थे। I'll talk about this as well, just बने रहो थोड़ी देर और। पैसेज 3 आइडल अटेम्प्ट अगेन शुड बी 4, राइट। अगेन 8 मार्क्स। आई एम ऑल्सो अगेन यहाँ पर वही बात कर रहा हूं मैं कि आपको इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, यू शुड बी ओके विद इट। सो अगेन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आइडल अटेम्प्ट्स 4 जिसमें 8 मार्क्स। फोर्थ पैसेज वाज द पैसेज, एंड दीज काइंड ऑफ अ पैसेज जो मैं हमेशा बोलता हूं, इनका शिकार करना चाहिए। दीज पैसेजेस नीड्स टू बी हंटेड, एंड 12 मार्क्स हियर। A good student with a good practice in reading comprehension and who is targeting 99 percentile, this should be the ideal marks, right? So how many of you agree in the chat box quickly that passage 4 was the easiest one? Quickly in the chat box. Quickly in the chat box, how many of you do agree that passage 4 was an easiest one? Quickly. ओके सर, यस वी राइट। अभी तो सर भूल गए हम लोग, पता ही नहीं है हमारे को। ओके सो ये आपके ओवरऑल अटेम्प्ट से 16 में से, सो 16 में से मैं अटेम्प्ट जो बोल रहा हूँ 8 and 6, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट 14 अटेम्प्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 14 अटेम्प्ट्स हियर। और 14 अटेम्प्ट्स के अंदर मैं अगेन बोल रहा हूँ आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत होना वाजिब है, राइट। एंड दिस इज वेयर यू विल बी प्लेस्ड out of 16 14 odd attempts. This is where you will be placed as far as number of as far as your net score and number of questions net right. This is what you will be, this is how you will be placed for sure. Okay, good. Okay, then coming on to parajumbles, as I said, parajumbles मैं already बोल चुका हूँ, 2 were doable. Para summary, again 6 marks I have written there, out of 3 2, and odd sentence parajumble 1. So मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन करे हैं। In fact, ओके मनीष, ओके मनीष, नहीं सर आपने क्लास में बताया था। ओके सो पैरा समरी, पैरा जंबल्स, ऑड सेंटेंस पैरा जंबल्स, आउट ऑफ दिस 8 4 to 5 is something to get the desired percentile, right? So good attempt should be around 19 questions with 90% accuracy, and this is what I'm talking about, that somewhere around 45 to 47 इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, because slowly and gradually I'm getting the score, and typically I would say इसको 40 के अराउंड कर दो, 40 to 40 के आसपास you will hit 99 odd percentile. So verbal के अंदर around 40 to 42 marks to get 99 odd percentile is something जो कि इस पेपर के अंदर, अगर ये ऐसा पेपर आता है, is something you should get, right? Is it clear everyone? Is it clear? If you have any questions, keep chatting it on the live chat. I can see the live chat and I will answer for sure. So these are the predicted percentile. It may go down slightly, I would say. So 45 to 49 odd marks, I would say 99 percentile, 40 to 44, 95 percentile, 35 to 38 marks, 90 percentile. As I say, it may slightly go down. It may slightly go down because I thought 45 to 49 is bit on a higher side. So this is what the marks distribution will be, or the marks predicted percentile would be as far as your percentiles are concerned. Typically इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है? This is only verbal as I discussed, ठीक है? Moving on to reading comprehension. Reading comprehension के अंदर पहला पैसेज की मैं जब बात कर रहा हूं, सो आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड और फैक्ट बेस्ड, राइट? सो आई हैव ट्राइड टू गिव अ मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस as far as the passages are concerned, both in terms of genre of the passage, that's what we have done, and also in terms of questions as well, right? This passage should be taken as the first passage to attempt. I would not say this, I would say the fourth one, not this one. 3 questions, 100% accuracy, 9 marks is something. Lovepreet, I hope मैंने बोल दिया होगा कितने attempts हैं, I hope मैंने आपका आंसर दे दिया होगा. So yes, so 9 marks here. So 3 questions, 100% accuracy is something to be targeted from passage number 1. This is what I would mention here, 9 marks here, ठीक है? अगेन 2 इजी क्वेश्चन थर्ड, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, करना है। मुझे बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन 3 मेरा गलत है? मतलब तुमने देख लिया है, अगर आपको पता है, कितने लोगों को पता है क्वेश्चन 3 मेरा गलत है? क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया है और गलत हुआ है, कितने लोगों को पता है? क्विकली
I have attempted question 3 and it is wrong. How many of you? Quickly in the chat box. कि क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट हुआ है और गलत है. Quick. Attempt and wrong. I couldn't see wrong. Yes sir. Okay. SM. Okay. So क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 की जब मैं बात करूं, अगर आप जब आप एनालिसिस करेंगे तब देखिएगा जब मैं वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भेजूंगा. सो क्वेश्चन 3 समथिंग अगर आपका गलत हुआ है, इसको छोड़ देना चाहिए था. लेट्स से मूविंग ऑन टू, वेरी गुड. शिवम बोल रहा है मेरा गलत, लवली बोल रही है मेरा गलत. तो तुम्हारा अगर गलत है तो अटेम्प्ट क्यों करना था? नहीं करना था अटेम्प्ट, राइट? इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा हूं. सेवंथ क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट था, इसको छोड़ देना चाहिए था. 8th क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, इट मे गो रॉन्ग. यहां पर मे गो रॉन्ग की बात मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब है यू शुड गो फॉर इट. ऑब्वियसली हम 100% परफेक्शनिस्ट से जाके हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई वुड से इट मे गो रॉन्ग, राइट? बट यू शुड गो फॉर इट. बिल्कुल 8th क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए था. अगर गलत भी हो जाता है, यू शुड बी ओके विद इट. बट इसके अंदर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूं, एक गलत हो सकता है. और अगर इसके अंदर 2 नेट करेक्ट अगर आपके आ रहे हैं with let's say 5 odd marks, मैंने पहले पैराग्राफ के पहले पैसेज के अंदर I have mentioned 9 marks, सेकंड के अंदर I am saying 5 marks, again with net 2 questions correct, you should be okay with it because questions were tricky and so were the options as well, right? So 9 plus 5 we are talking about 14 marks. अगर अगेन मैं बोल रहा हूं आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं और ना ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. और मैंने जब वीडियोस भेजे थे फॉर दोज जिनका ये डिजायर्ड स्कोर नहीं आया है या व्हाटसोएवर, आप सारे क्वेश्चंस नहीं करते, प्रोबेबली यू कुड हैव स्टार्टेड विद 6 क्वेश्चन नेट करेक्ट. अंकुर सर जब बात करेंगे क्वांट्स के अंदर और मैं ऑलरेडी वर्बल के अंदर बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस एटलीस्ट किए जा सकते थे. पैसेज थर्ड, अ वेरी बैलेंस्ड पैसेज, 2 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, 2 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इजी पैसेज, go for all attempts for sure, and 3 net correct, good to go, right? You should be okay with it. सारे अटेम्प्ट्स करूंगा, 3 नेट करेक्ट. सो मैं ऑलरेडी 9 plus 5 14 मार्क्स पे आ चुका हूं 2 पैसेज के अंदर. यहां पर मैं 3 नेट करूंगा, सो 3 नेट के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट 9 minus 1 8. सो अगेन आई विल बी कमिंग टू 22 odd marks by the time I'll read. I'm coming to passage number 3, and if I talk about passage number 4, yes, okay, SM, okay, Ujjwal, I agree. I'll give you the I'll give you the solution as well, don't worry. So, and I will check as well kahan se dekh sakte ho. So 13 14 15 16, as I said, all the questions were easy. Hunt for passages like this, and there were idea based questions, fact based questions, inference based and source based questions. ओवरऑल अगर इस पैसेज 4th पैसेज की बात करोगे, सो आई एम सेइंग 4 क्वेश्चंस 16 मार्क्स, राइट? और अगर सोचो, जब मैं परसेंटाइल्स की बात कर रहा हूं, अगर आप 4th और 1st इन 2 को भी ले लेते, आपका काम हो जाता. अगर तुम जापान वाला क्वेश्चन जो 2nd नंबर पैसेज है, अगर वो कल्चर वाला पैसेज नहीं भी लेते, यू शुड बी गुड टू गो एज वेल, राइट? Okay, so the next thing which is coming up, sir, options were tricky, so I panicked and attempted 22 out of 24. मत करो यार, मत करो प्लीज. 22 में से चॉइस क्वेश्चन शिवांशु नहीं करना चाहिए था भाई, बिकॉज पॉइंट इज नहीं करो वर्बल के अंदर, और उसका नतीजा भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से. एम आई राइट? नंबर ऑफ इनकरेक्ट वेंट डाउन, ठीक है, आई मीन वेंट अप. सो नहीं कर सकते इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट. सो 22 and 24 बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले चीजें हैं, राइट? ओके, Paragammas, sorry, I have not mentioned the number question number here. We should get sectional wise percentile also for improvement. उज्जवल मैंने दे दिया ना भाई, मैंने दे दिया, वो हम लाइव एनालिसिस के अंदर करेंगे, डोंट वरी, मैंने दे दिया. अंकुर सर क्वांट्स की बात करेंगे, शैलेश सर जब अपने एनालिसिस का आपको वीडियो भेजेंगे उसके अंदर ही विल टॉक अबाउट LRDA एज वेल. इज इट क्लियर? ठीक है सर, पूरे VARC में से 6 क्वेश्चन करने. नहीं लवप्रीत, मैंने क्या बोला था, अगर आपके ओवरऑल, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल मार्क्स, लवप्रीत, अगर मैं बोल रहा हूँ कई स्टूडेंट्स के ओवरऑल मार्क्स ही लेट्स से 30-32 आ रहे हैं, तो मैंने जब वीडियो के अंदर मैंने जब बताया था, सो वीडियो के अंदर इतना तो शिवांशु अभी बहुत टाइम हो गया साथ रहते रहते, तो मैं समझ सकता हूँ अगर तुम नहीं बताओगे तो. ओके, सो ओवरऑल जो मैंने हमेशा जो मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपके ओवरऑल स्कोर 30 से 32 या 35 आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं. तुम अगर नेट 6 सही करने की बात करते हो, राइट? लेट्स से तुमने 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें नेट 6 करोगे तो भी यू विल बी सिटिंग एट लेट्स से 80-85 ऑड परसेंटाइल फॉर श्योर.
not 85 but 80 for sure. So at least itna to kare hum log. Is it clear, Lovepreet? Right? So if I talk about parajumble, the first parajumble that Fritz Gerald wala, it was difficult. Then the second one was easy. I think it was that employment wala parajumble, and the third was moderate, wherein we are talking about FDR wala passage, parajumble. So that FDR wala and employment wala parajumble were easy. Agree or not? Agree or not that Roosevelt and that employment wala parajumble was easy, but the first parajumble was difficult. Agree or not? Agree or not? So अब सोचो, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, इसमें से कई लोग बोल रहे हैं यस अग्री अग्री अग्री, तो इसका मतलब द थिंग जो कि डिफिकल्ट है सबके लिए है, चीज जो इजी है वो सबके लिए है. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो टू क्वेश्चंस नेट इज समथिंग व्हिच यू शुड गेट. पहला वाला ऑब्वियसली अटेम्प्ट करोगे, और अगेन मैंने जो इसके अंदर बोला था, अब सोचो मैंने 5 क्वेश्चंस की बात करी है आपको ओवरऑल, 5 छोड़ दो, मैं 4 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं इन वर्बल एबिलिटी, एंड आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. सो 4 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स, जो मैं हमेशा बोलता हूं 2.5 मिनट लगाओ. तुम लगाते हो 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2.5 मिनट लगाओ. कैसे दो पैराजंबल सही नहीं होते? I don't agree with this. Odd sentence parajumbles, difficult, moderate. Here I am saying 0 and +3. Only one question is something which I am expecting. Summary based question, moderate, difficult, moderate. Right? Even if you get out of 3, 1 question net correct, I think it's good to go as far as this mock one is concerned. Okay? So this is, I think, how the questions were placed. This is how the questions were placed. मैं क्विकली आपको वापस बोल देता हूं, राइट? तो मैं जो रिपीट करना चाह रहा था आपको, आई थिंक अंकुर सर आप हो यहाँ पर. जस्ट अ मिनट गाइस. Okay, I can get into this. So the quickly what I am getting into is ये चीजें आपके बहुत important थी, right? This is something which should be done 30 minutes or 28 minutes, 12 minutes. Point number 1, idle attempts in RC. ये सब चीजें मैं 99 percentile की बात कर रहा हूँ as of now. 14 questions, let's say in reading comprehension, 4 questions in verbal ability. मैं 18 questions की बात कर रहा हूँ, let's say out of 26, out of 24 में से मैं 18 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं आपको, एंड उसके अंदर 90% नेट एक्यूरेसी. अगर आप 16 क्वेश्चन नेट करेक्ट सही कर देते हो, यू विल बी हिटिंग 99.5 परसेंटाइल, एंड दिस इज व्हाट द ओवरऑल परसेंटाइल इज ऑल अबाउट. 45, I would say 45 के आसपास I am talking about 99 odd percentile. 40 के आसपास I am talking about 95 odd percentile, and 35 के आसपास I am talking about 90 percentile. Is it clear everyone? सर पैराजंबल में नेगेटिव नहीं होते तो क्या सर? बिल्कुल पैराजंबल के अंदर उज्जवल पैराजंबल भी सारे अटेम्प्ट करोगे, और सेंटेंस भी सारे अटेम्प्ट करोगे. देखो मैं जब आरसी के अंदर छोड़ने की बात कर रहा था, यहाँ मैंने आपसे छोड़ने की बात नहीं करी, अगर तुमने देखा होगा, राइट? सो मैंने आपसे यहाँ पर छोड़ने की बात एक बार भी नहीं करी है. मैंने यहाँ पर आपको प्लस और माइनस लगा के दे दिया था, आई मीन प्लस और 0 लगा के दे दिया था, एंड आई हैव डन नथिंग एल्स. मैंने और कुछ भी नहीं किया था. 0 and +3 बिकॉज अटेम्प्ट तो इसके अंदर सारे कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं अटेम्प्ट किसको गिन रहा हूं? मेरे लिए अटेम्प्ट मतलब क्या है? जब आप टाइम डिवोट कर रहे हो. मेरे लिए अटेम्प्ट वो नहीं है जो आप आंसर मार कर रहे हो, दैट इज नॉट एन अटेम्प्ट. मेरे लिए अटेम्प्ट है दैट वेयर एवर यू आर डिवोटिंग टाइम, दैट इज एन अटेम्प्ट. क्लियर उज्जवल? क्लियर उज्जवल? समझ में आया? राइट? सो दिस इज आई थिंक verbal ability and reading comprehension was all about. एंड नाउ इसके बाद जब मैं वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, और उसके बाद लास्ट में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कंसर्न हो, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी. एनीवेज यू ऑल हैव माय नंबर, एंड फॉर दोज हु डोंट हैव माय नंबर, दिस इज माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस इज माय ईमेल आईडी. यू कैन गेट इन टच विद मी फॉर श्योर ऑन दिस नंबर, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम स्टिल हियर विद अंकुर सर. आई एम नॉट लीविंग, राइट? बट अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी कंसर्न है, you can get in touch with me for sure. Ankur sir, over to you with quantitative aptitude, sir. And I will help you, Ankur sir, with questions, what all questions are coming, so that you can answer those questions live. एक बार सर आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देंगे, सो मैं LRDA का भी थोड़ा कुछ बात कर दूं. राइट? ओके, सो गाइज आई थिंक जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे थे कि सर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तो आंख बंद करके भरोसा करना है. देयर इज नो डाउट्स, राइट? बिल्कुल जो नेगेटिव जहाँ पे नहीं है वहां पे तो बिल्कुल यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू अटेम्प्ट द एवरी क्वेश्चंस, राइट? आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही करना है. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
ओके, सो यहाँ पे अपन LRDA की बात कर लेते हैं, राइट। जो सर ने बताया थोड़ा मैं डिटेल्स के अंदर ले जाता हूँ, राइट। थोड़ा अपन डिटेल्स के अंदर जाते हैं। आई थिंक प्रशांत सर बहुत सारे चैट्स के अंदर भी रिप्लाई आ रहे हैं स्टूडेंट की, लेट्स सी कि क्या वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। आई थिंक Guys, if you have any questions as far as quant is concerned, before Ankur sir start, I mean, for LRDI is concerned, before Ankur start with his LRDI analysis, right? And this is coming directly from Silas sir. So, अगर आपके कोई भी questions है, कोई भी concern है, quickly in the chat box, please. Ankur sir, I think आपका screen stop हो गया है. yes, I am doing again. Is it fine now if I'm not wrong? Yes sir, you can start sir. और अगर कुछ भी questions आते हैं, I'll help you out. Whatever questions are coming sir, you can start. ओके, सो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स के अंदर डिस्कस जो यहाँ पे बात किया हुआ था उसको मैं थोड़ा डिटेल में ले जाता हूँ कि टोटल क्वेश्चंस 20 वाज देयर एंड 40 मिनट्स के अंदर उसको कैसे आई थिंक कवर करना चाहिए। तो जिसके अंदर मैंने बताया कि जो फर्स्ट टॉपिक था विच इज द मिसिंग डेटा सेट के अंदर था, एब्सोल्युटली दैट वाज द मॉडरेट, राइट। एब्सोल्युटली दैट वाज द मॉडरेट, जिसके अंदर आपको 1 से लेके 6 क्वेश्चंस जो आए होंगे दैट वाज फ्रॉम द सेट 1 जो मिसिंग डेटा के बेस से था। बिल्कुल इसके अंदर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, दैट वाज द गुड सेट, इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए था। यहाँ पे बिल्कुल स्कोप था आपको अच्छे करने का। जो लास्ट सेट था अगेन जहाँ पे लिखा है कि डेटा अरेंजमेंट दैट वाज द इजी, दैट वाज द इजी, वो एब्सोल्युटली आपको पहले ट्राई करना चाहिए था। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी ट्रिक्स दूंगा कि ऑलवेज कोशिश करिए कि नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के अंदर आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए कि आपके पूरे पेपर के अंदर के जो आपके क्वेश्चन है वो कहाँ से। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि सर आई एम वेरी गुड इन देयर, डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दीजिए, उसके अंदर आप दिमाग के अंदर लगा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लास्ट में आते हैं जहाँ पे डेटा अरेंजमेंट का सेट वाज द इजी, लेकिन आपके पास शायद टाइम नहीं बचा होगा उतना जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। इजी होता है, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक वहां पे होता है। सो प्लीज गाइज ट्राई करिए, कभी भी केट का जो आपका रिजल्ट होगा वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था या हार्ड लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको हमको कभी भी ऐसा ईगोट नहीं हो जाना चाहिए कि मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। आई वांट परसेंटाइल, मुझे परसेंटाइल से प्यार है, मुझे परसेंटाइल चाहिए कुछ भी करके, राइट। सो आपको जो इजी सेट है उसको पहले पिकअप करना चाहिए। थर्ड वाज द लॉजिक बेस्ड DI, एब्सोल्युटली इसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज एब्सोल्युटली इसको छोड़ देना चाहिए। देयर इज नो डाउट, इसके अंदर हमारा टाइम नहीं लगाना चाहिए बिकॉज दैट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। उसके पहले आपको सेट 1, 2 एंड 3 करना चाहिए था। कितना टाइम इसके अंदर आपको लगाना चाहिए था, मैं सेट 1 की बात करूं जो आपको 18 मार्क्स देके जाने वाला था, राइट। और वहां पे आपको 15 से 20 मिनट्स का आपको अप्रोक्सीमेट टाइम लगाना चाहिए था विद द क्वेश्चन, राइट। सो आपको अप्रोक्सीमेट इतने टाइम्स लगाना चाहिए था। सेट 2 की बात करूं जो 12 मार्क्स आपको देके जाते हैं, जहां पे मैं बात करूं कि 10 मिनट्स आपको लगाने चाहिए थे, आपको 10 मिनट्स वहां पे लगाना चाहिए था। सेट 3 की बात करूं जहां पे आपको 15 से 20 मिनट के आसपास का टाइम स्पेंड करना चाहिए था। एंड अगेन द सेट 4 जिसके अंदर दैट वाज द इजी प्रोबेबली, तो आपको जिसके अंदर 10 मिनट्स टारगेट करना चाहिए था। गाइस, तो दिस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। जो आप दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, नो डाउट्स बहुत सारी गलतियां होगी और बहुत सारी चीज अपन इंप्रूवमेंट लाएंगे, लेकिन जब अपन 7 अगस्त को जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमने गलती किया वो गलती वहां पे नहीं होनी चाहिए और वहां पे अपन इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द LRDA। और आई थिंक जो हमने डिस्कस किया दिस इज द परसेंटाइल। आई थिंक आपके दिल के अंदर क्वेश्चन होगा कि सर कितने मार्क्स लाने से कितने परसेंटाइल आएंगे। सो गाइज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपको 30 to 32 marks लाने पे you will get 99 approximately percentile and 22 to 24 will give you 95 percentile and more than 18 तो approximate में 18 की बात करूं that will give you the 90 percentile, right? तो ये आपको 90 percentile के आसपास देंगे जो बिल्कुल आपको अच्छा परसेंटाइल की ओर ले जाते हैं। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना जो आपने देखा है, बिल्कुल आपको वहां तक ले जाएंगे, राइट। और क्वांट का आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस, मैं क्वांट की आपको बात करूं 13 क्वेश्चन वाज देयर, आप 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे करेक्ट वाला, सो बिल्कुल आपका 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। देयर इज द नो डाउट्स, आपका वहां पे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, राइट। So this is I think all about the details and बहुत जल्दी you guys will get the video solution जहाँ पे आपको each and every question हमने टारगेट किया है, each and every questions को हमने सॉल्व किया है। शायद आपने भी
सोल्व किया होगा। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या अप्रोच लगाना चाहिए, हमने क्या अप्रोच लगाया है। एंड हो सकता है कि आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा, न्यू कंसेप्ट, न्यू शॉर्टकट्स भी आपको वहां पे मिलेगी। सो आई होप आप लोग उसको भी एंजॉय करेंगे। और टू यू सर। Okay, so few questions which are coming up. SM will talk about this as well. 4 to 5 out of 8 in PJ, PS, and odd sentence. SM, as I said, absolutely right. SM, when we talk about the RC approach, absolutely right. Okay, Priyansh, get in touch with us, right? Anyways, you have our number. Ankur sir, can you display the slide wherein we have a number and all? So, मैं कर देता हूं, Ankur sir, don't worry. So, this is something, Priyansh, you can get in touch with us and we'll let you know कैसे करना है, ठीक है? And next mock is the few things which I want to say here is next mock, as I said, is on 7th of August, right? So stay tuned and we'll come up with next mock as well. कई again मैं बोल रहा हूं अभी for all the students who are listening to this particular session, आपको एक चीज ध्यान करनी पड़ेगी, मैं वापस बोल रहा हूं कि अब इस मॉक के अंदर आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, that what went wrong, what went right, and this is something which you can do from the solution which will be provided to you. That is point number one. Anyways, this analysis will come on YouTube as well. We'll share the recording on YouTube as well, and you can go for this analysis again. You can see this PPT again when we talk about the hard questions, easy questions, L1, L2s, and L3. Ankur sir will share the quants, Silas sir will share the LRDI. I will share this PPT for verbal as well. So उससे अब important चीज क्या है guys? Strength और weakness लेना बहुत जरूरी है. That exactly what is my strength? मेरी strength क्या है? Probably you will come out and say that my strength is, let's say, reading comprehension. मुझे reading comprehension के अंदर अच्छा लग रहा है. You will come out and say that मेरी weakness basically क्या है कि मैं शायद option elimination के अंदर बहुत ज्यादा weak कर रहा हूँ. मैं पढ़ तो ले रहा हूँ. I'm very good with comprehension, but when it comes to option elimination, I am struggling there. And we can discuss all these things in the live classes as well. That sir ये mock के अंदर difficulty हुआ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है. और मैंने detailed solution, so we have done is what you will have 1.5 hour a detailed solution of all the questions, that how these question needs to be attempted, what all question needs to be attempted on in the first 20 minutes as far as LRDI is concerned or points is concerned. और ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, and you should come out, or you should come out of these learnings, and you should go with your next mock with all these learnings so that you can gradually increase your percentiles. So अभी जो भी आपके overall score है उसके हिसाब से अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको ओवरऑल स्कोर की भी बात कर दूंगा. अच्छा, मैंने ओवरऑल स्कोर की बात नहीं की आप लोगों से अभी तक. आई थिंक इसका आप लोग वेट कर रहे थे कि सर आपने परसेंटाइल ये तो बता दिया कि एलआरडीआई के अंदर क्या होगा, या फिर लेट्स से यू टॉक्ड अबाउट वर्बल के अंदर क्या होगा, क्वांट्स के अंदर अंकुर सर ने बता दिया. सर ओवरऑल परसेंटाइल की बात करो. सो माय टेक ऑन ओवरऑल परसेंटाइल फॉर दोज हु आर लिस्टिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन इज, सो फॉर ओवरऑल परसेंटाइल I would suggest close to around 105 odd marks. 105 odd marks. I am talking about 99 percentile, right? So 105 odd marks, I would say 99 odd percentile. If I talk about 95 odd marks, I would say 95 odd percentile, right? So 105 के पास we are talking about 99 percentile. If I talk about 95 odd marks, I'm talking about 95 odd percentile. इसी चीज को लेट्स से अगर आप 85 परसेंटाइल के आसपास अगर कुछ बात करते हैं, सो मैं इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर लिख देता हूं. सो 99 परसेंटाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट 105 odd marks. If I talk about, let's say, a percentile of 95, I'm talking about roughly 95 odd marks. If I talk about, let's say, 85 odd percentile, I'm talking about somewhere close to 75 to 80 odd marks. So guys, this is how your marks are placed. This is how your marks are placed overall to get the desired percentile, right? So this is something आपको ये सारे मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे आपको डिजायर्ड परसेंटाइल लाने के लिए. और अगेन बोल रहा हूं, आपके अभी जितने भी मार्क्स आए हैं दैट इज परफेक्टली फाइन. स्टार्ट विद, अगर आपको लग रहा है मेरे 60s में है या 55s के अंदर एंड व्हाटसोएवर, सो स्टार्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर मार्क्स. और वो कैसे होगा? द मोर यू डू अ मॉक एनालिसिस, द मोर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू इंक्रीज योर मार्क्स ग्रेजुअली. ठीक है? यस, उज्जवल खरबंदा, इट इज अ राइट अप्रोच फॉर श्योर.
ठीक है. So that's it from our side, guys. Ankur sir, thanks a lot for coming up and doing this analysis, and thanks everyone for listening to this analysis, and keep giving us feedback. That I hope the analysis was good, a bit fruitful for you. If there are any other further questions, concerns, you can get in touch with us on given coordinates. Thank you, guys. Thanks a lot, and stay tuned with the Ekoching. Thank you, Ankur sir. Thank you. ओके सो जो सर ने बताया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइस इस मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपका मार्क्स आया है उसको दिमाग में लेके नहीं चलना है, चाहे वो बहुत अच्छा आया है, चाहे वो बहुत खराब आया है, चाहे वो एवरेज आया है, राइट. उसके अंदर जो आपने मिस्टेक किया है उसमें से आप लर्निंग लीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर उसको इंप्लीमेंट करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, दैट्स इट. बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सर मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. हमारे पास अभी इनफ टाइम है. डेफिनेटली वी विल गाइड यू कि कैसे करते जाना है. डे बाय डे हम आपको मदद करते रहेंगे. सो कहीं पे भी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मार्क्स को बिल्कुल दिमाग के अंदर मत आने देना. यस, जो गलती किया है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना. थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग Ekoching. थैंक यू. Okay, thank you guys, thank you everyone, thank you, bye bye, take care guys, thank you, thanks a lot.